In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Ameer. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश पार्ट 2 का ओ जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर 1 सेंटेंस है, हम मुस्तकबिल के वाक़यात से मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं। We are altogether unaware of the future happenings. नंबर 2, ये एक छुपी हुई नेमत है। It's a blessing in disguise. नंबर 3, अलबत्ता मौसम की पेशनगोई भी 100% दुरुस्त नहीं होती। Even the weather forecast is not 100% correct. नंबर 4, उसने कहा शायद कल मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिश हो। It said it might rain the next day in some parts of the country. नंबर 5, अगले दिन बारिश शुरू हो गई लेकिन कुछ इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। It started raining the next day, but in some areas there was no rain at all. नंबर 6, कुछ लोग बारिश वाले दिन से लुत्फ़अंदोज़ हुए। Some people enjoyed the rainy day. नंबर 7, कहीं पे ओले पड़े और कहीं पे बारिश हुई। Somewhere it hailed and somewhere it rained. नंबर 8, कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग परेशान हुए। Some people became happy and others became upset. नंबर 9, वो जो बंगलों में पक्की छतों के नीचे रहते हैं वो महफूज रहते हैं। Those who live in bungalows under cemented roofs remain safe. नंबर 10, वो जो तिनकों की झोंपड़ियों में या मिट्टी के घरों में रहते हैं वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। Those who live in straw huts and mud houses feel themselves unsafe. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in next video. Allah Hafiz.